अच्छा, इसका फॉर्मेट क्या रखना है? डू वी जस्ट डिस्कस थिंग्स? यार हाँ, मतलब लाइक सिलेबस सामने खोल ले, पूछता ठीक है। जाई, कहता है तो मैं भी लीड ले सकता हूँ। आई कैन रिव्यू, मतलब जनरली। 5054 था ना कोड, हम्म फिजिक्स। हाँ, एंड वी आर आल्सो डूइंग IGCSE वाला पार्ट, राइट? वो दोनों सेम ही है, there's not a lot of difference now, like actually they're identically same now. They are identical now. Yeah. Okay. I think they are trying to bring O levels closer to IGCSE anyway. Because we are that live. makes more sense. I think हम ना we will have to break it down into 2 sessions. So maybe एक और session जो है वो हम कर सकते हैं, मंडे को कर लेंगे। Yeah, definitely. हाँ, एक सेशन में ही चीजें खत्म होनी। ठीक है, ठीक है। I think we are live now. Yeah, we are. I just checked. We are? Yeah, we are. Okay. Yes. So you can take the lead and then I'll start. Yeah. So first of all, thank you so much for joining. I just need to share the link with the students so that they can all come in, and then we can take things from there. I've shared it with you as well. Check your WhatsApp. Yeah, here we are. So we have a few students with us today. The rest will come. Hello, Zamin. Good to see you. Okay, everything is ready to go. Yeah, so you're sharing your screen right now. Yeah, I'm sharing my screen. Okay, okay, so I'll just ask you some questions and you can answer them. Sure. So I'll try to be a good student. So first of all, what is space physics, and why did they just decide to add this chapter to, like, I think there are 2 to 3 answers to these questions. Number 1, space physics is the best way to actually see a dynamic side of science. So if you think about particle physics in A levels and space physics in O levels, both of these subjects are subjects that are continuously developing. New discoveries are being made. So if somebody is a science enthusiast right now, most likely than not, they would be following what is happening in terms of planet sightings, or what is happening in terms of NASA updates. Obviously, with in the recent times, we also saw for the first time the first commercial flight into space. So we're slowly and steadily moving towards this bigger dream of, maybe realizing that the end of the Earth or end of the solar system does not necessarily mean that it has to be the end of the humanity. And that's a very Gnostic idea, jo ke badi der se has been there in the West and is something that they've been working upon. So the most amount of funding in the Silicon Valley in the last 10 years has went to 2 pursuits mainly. One is space and the other is immortality. And when you think about things, this is where we're going. So and secondly, I think the सबसे interesting cheese ye hai, you don't need anything to do space physics. So I think when you're just like lying outside in your garden and you're looking at the stars and it's a clear sky, fingers crossed, and you don't have a smoggy day, you can see the majestic. मैं तो इसको कहता हूँ ये गरीबों का थिएटर होता है. अगर कभी कभी आपका चांद निकला हुआ है और बादल मूव कर रहे हैं ना, तो एक गरीब बंदा जो कि cannot afford entertainment,
can actually just look at that and be fascinated by the beautiful things that they can see and the visuals there are. फिर So obviously fascination is all right. Sorry, go on. Go on. yeah, I was just फिर saying उसके कि हमारे पास जब हम लैब में करते हैं फिजिक्स में पेंडुलम हो गया या बाकी सब चीजें जब हम पढ़ते हैं तो there is some level of personal interaction that we have had with these things apart from the nuclear physics वगैरह. तो बिल्कुल स्पेस फिजिक्स में सिवाय इसके कि हाँ ठीक है हमने एक्सप्लोर कर लिया हमने ऑब्जर्व कर लिया हम उससे इम्प्रेस भी हो गए बड़ा मैजेस्टिक व्यू भी मिल गया बट फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स जैसे लाहौर में स्टूडेंट्स हैं उनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज हैं स्पेस फिजिक्स को अगर वो एक्चुअली में बिल्कुल स्टडी करना चाहें या बिल्कुल इसकी कोई बिल्कुल बिल्कुल एप्लीकेशंस हमारे मुल्क में कल को. बिल्कुल अच्छा सो प्राइमरीली अगर आप कोई भी गूगल या एप्पल की ऐप स्टोर में जाएं तो यू विल गेट एन एप्लीकेशन व्हिच मैप्स द पोजीशन ऑफ गैलेक्सीज अराउंड यू नंबर 1. Number 2, if you're a slight bit of an enthusiast, last Lahore Astronomical Society does a fantastic job in terms of citing. There is another person by the name of Explorations by Yamna. She also does a fantastic job talking about space and, citing. So I think the first step towards actualizing and realizing, kya ho raha hai, kya nahi ho raha, is, maybe having a telescope. But let's suppose you don't have a telescope and you can't afford one. So in that case, there is a software by the name of Sky Zain se nikal raha, but I'll post the link. So that software basically has been compiled with pictures from almost all of the known stars that we have around in different resolutions. So you as an individual can, view those pictures and see कि क्या sightings होती हैं, किस तरह की sightings होती हैं. And that these are baby steps. So if this starts to fascinate you, then you start looking at comets, you start looking at exoplanets, and then last but not the least, when you go to NASA ki website, you as an individual can actually discover exoplanets. So there is a lot of data given on the NASA website, which you can go and help them to sort out. So whenever there is an exoplanet that is discovered, there is a slight blip in the graph that you see. I can maybe talk about it. Ye itna lamba topic hai ki maybe I can just talk about this in one podcast. Yeah. I'm just touching upon these things. If you are an enthusiast, there are a lot of opportunities online that you can do where you can learn about these things, participate in these processes, because remember, astrophysicist या cosmologist जो है, his like, even though we feel सितारे और ये सारा कुछ है, it's not an easy job because it's a very, very difficult task where you have to go through this enormous amount of data, and all of that data leads to just one discovery. But then you also need to understand that this data and this discovery is basically answering a very, very, very fundamental question that human beings have been asking for a very long time. And that is, why was there something rather than nothing, first of all? And the second idea is, where did we come from? Yeah, exactly. And the more and more we, get close to that, the more and more we understand where we are going. So अच्छा, अब इसमें हमारे पास दो तरीके हैं इसको चेक करने के. लाइक इवन इन द सिलेबस उसने इसको दो तरह डिवाइड किया है. One is we start with the earth and then we zoom out and we try to see के stars, sun, ये वो सारा कुछ. और अभी जैसे you were saying words like comets or asteroids, तो एक तो वो ऑप्शन है हमारे पास. दूसरा ये कि we start with the universe as a whole and then we zoom into our planet. Which approach do you think is right? I think I would start with the earth because okay, let's go with that. जैसे मिसाल के तौर पे, like the reason why this became one of the most interesting topics is, इस टॉपिक को करने के लिए ना सबसे पहले you have to understand कि आपकी पोजीशन ऑन अर्थ किधर है. सो पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, ठीक है. और क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, तो हम सन को और जो हम सीजन्स को व्यू करते हैं वो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के थ्रू करते हैं. इसी वजह से जैसे अगर आपने कभी देखा हो तो क्रिसमस एंड स्नो आर टू थिंग्स दैट गो हैंड इन हैंड, बिकॉज नॉर्मली अ लॉट ऑफ मीडिया प्रोजेक्ट्स के क्रिसमस पे स्नो हो रही है. But then when you think about Australia, which is in the southern hemisphere, there is no snow. So that kind of builds this intuition कि while एक तरफ Christmas पे इस कदर ठंड होती है, यानी 21st December is the coldest day in the northern hemisphere,
but at the same time 21st December is the hottest day in the southern hemisphere. So ये जो idea है, so because we are in the northern hemisphere, हमें सबसे पहली चीज जो नजर आती है वो चीज ये नजर आती है कि so this diagram is very very useful in understanding what is happening here. So 21st December is the coldest day of the year. 20th March is probably the time जब हमारे पास spring होता है. 21st June is the hottest day of the year for us, and 23rd September is when all the leaves have fallen and you are going through the autumn. अब this reverses. So 20th March, अगर आप southern hemisphere में चले जाएं, so ये चीजें उल्टी हो जाएंगी. So ये winter, so this will become summer. This will become winter. This will become autumn. And this will become spring. अच्छा, अब हमें समझ ही आती है कि जो seasons बन रहे हैं ना, ये seasons इस वजह से बन रहे हैं because the earth is orbiting the sun. And because of the orbit, we see these seasons. अच्छा, but अच्छा, before you go into that के seasons और ये अर्थ, ये इसके ऊपर उसने अर्थ को थोड़ा सा टिल्ट किया हुआ है. ये टिल्ट कहाँ से आया और ये टिल्ट क्यों है? So the tilt of the earth कहाँ से आया, ये तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि तुमने प्रॉम्प्ट किया है, तो इसके बारे में मैं सोचूंगा. आई थिंक फॉर अस ये तब आया था जब मून बना था ना, बेसिकली वहां से आया था. ओह अच्छा, सो इट्स अ लॉस इन मोमेंटम वाली चीज. सो या सो आई डू नो दिस स्टोरी कि मून क्या हुआ था और कैसे बना था, but I did not connect it to the fact that it was tilted because of it. But chalo, I've learned something new also today. So the idea is कि अर्थ के टिल्ट की वजह से, so जो टिल्ट है ऑब्वियसली वो आपका विंटर और जो आपके जो सीजन्स है वो बिकॉज ऑफ रोटेशन है, और आपका जो टिल्ट है दैट बेसिकली सो द रोटेशन ऑफ द अर्थ. सो अगर आप मोटा मोटा देखें तो अर्थ की दो मोशंस चल रही हैं. सो अर्थ इज गोइंग थ्रू ए रोटेशन ऑफ सन, एंड देन अर्थ इज ऑल्सो गोइंग थ्रू इट्स स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस. अब ये दोनों मोशंस जो हैं वो ऑब्वियसली फंडामेंटली कोई चीज आपके साथ कर रही है. सो स्पिनिंग ऑन द एक्सिस इज बेसिकली कॉजिंग डे एंड नाइट्स, एंड द रोटेशन ऑफ द सन इज बेसिकली कॉजिंग द सीजंस दैट वी सी. अच्छा, अब सीजंस का क्या इफेक्ट होता है डे एंड नाइट पे, दैट्स एन इंटरेस्टिंग आइडिया टू थिंक अबाउट. सो अगर आप यहां पे देखें तो जब आपके यहां समर होता है, so the sun, and this is the picture from the northern hemisphere, sun takes a longer trajectory, and because the sun is taking a longer trajectory, you have a longer day. इसी वजह से गर्मियों के रोजे जो है ना जान निकाल देते हैं आपके, क्योंकि वो स्टार्ट दिन बहुत जल्दी हो जाता है और एंड होने का नाम ही नहीं लेता. और यही रोजे अगर सर्दियों में आ जाएं तो आप हंसी खुशी वो रोजे रख लेते हैं, क्योंकि दिन बहुत छोटे होते हैं. अच्छा, बेसिकली रात की ये जो लेंथ है इसका इस चीज से ताल्लुक है कि हमारा टिल्ट है जमीन का, और उसकी वजह से सन को जो फेस कर रही है हमारी वाली साइड ऑफ द अर्थ वो कम टाइम के लिए फेस कर रही है. बिल्कुल बिल्कुल ट्रू. और इसके अंदर जो लास्ट चीज होती है वो इक्विनॉक्सेस होते हैं. अच्छा, अब जो इक्विनॉक्सेस हैं ये बेसिकली वो टाइम है कि जिसपे रात और दिन दोनों सेम ड्यूरेशन के हैं, एंड दैट इक्विनॉक्सेस आर बेसिकली ड्यूरिंग द ऑटम्स एंड ड्यूरिंग द स्प्रिंग. सो हमें समझ ही आती है कि जनरली समर्स में दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं. विंटर्स में दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं. और इक्विनॉक्सेस में मोर और लेस दिन और रात की ड्यूरेशन सेम होती है. और एग्जैक्टली कब सेम होती है, दैट्स बेसिकली दीज डेट्स. सो इट्स बेसिकली 20th मार्च एंड 23rd सितंबर को अगर आप दिन देखें तो वो एग्जैक्टली डिवाइडेड होता है. अच्छा, ये हमारे पास मेनली अगर आप पर्सपेक्टिव में लेकर आए, दिस इज बेसिकली द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड हाउ इट्स कॉजिंग सीजंस इन डे एंड अर्थ एंड डे एंड नाइट, एंड हाउ डे एंड नाइट एंड सीजंस आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर. सो ये एक हमारा एस्पेक्ट हो गया. अब उसके बाद हम दूसरी चीज क्या करते हैं कि हम अर्थ को जब देखते हैं तो अर्थ के इर्द गिर्द हमें इमीडिएटली क्या नजर आता है. We see two kind of objects. We see a lot of natural satellite. We see one natural satellite and a gazillion artificial satellites. अब वो artificial satellites हमारे पास क्यों हैं
वो उसका मेन वजह ये है कि हम चाहते ये हैं कि हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट्स भेजते हैं और उन सैटेलाइट्स के थ्रू हम ना सिर्फ वेदर फोरकास्टिंग करते हैं बट अ लॉट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन दैट वी सी जो कि सैटेलाइट लिंकेजेस के थ्रू होती है वो सारी की सारी इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के थ्रू होती है। अच्छा अब सर, सॉरी, बिफोर यू गो जी ऑन जी टू मून, मुझे आपसे दो तीन बस मुझे पॉइंट्स बता दें जो बच्चे याद कर लें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो अर्थ सन के इर्द गिर्द घूम रही है, इसका टाइम कितना लगता है इस पूरे चक्कर को इसको कंप्लीट 365 डेज 365 डेज एग्जैक्ट होता है? 365.25 होता है जो कि लीप ईयर में जाके वो ऐड कर ठीक देते है, हैं तो हम 4 साल बाद वो 0.25 ऐड करते जाते हैं और और वो वो लीप ईयर हम बन जाता है। ठीक है, माशाल्लाह तो फरवरी को गिफ्ट कर अब देते हैं। ओ लेवल के एग्जाम में अगर बच्चा लिख देता है 365 डेज और वो 3 पॉइंट्स, वो अगला 0.25 नहीं लिखता, तो उसको मार्क्स मिल जाएंगे? तो द आइडिया इज कि अगर आप देखें तो यू विल हैव टू लुक एट द सिलेबस डॉक्यूमेंट। आप अगर सिलेबस कहता है सिलेबस को अप्रोक्सीमेटली देखें 365 डेज। हाँ, सो अगर आपको सिलेबस, लेकिन उससे पहले कमांड वर्ड जरा पढ़ो, कमांड वर्ड क्या है? नो दैट। नो। So the idea is knowing that it is approximately 365 days means that number one, you understand you're approximating, and the rationale behind approximation is that so even if you write 365.25 days, I don't think the examiner is going to mark it wrong because it is right physics. ठीक है And the अच्छा, fact कि अगर आप 365 भी लिख दे approximately तो वो भी ठीक होगा because वो आपको सिलेबस में उन्होंने दे दिया। ठीक है। अगली बात ये कि ये जो इसका पाथ है, इसकी शेप क्या है? क्या ये सर्कल है? अगर हम सर्कल लिखें, या हम इलिप्स बोलें, या हम So अप्रोक्सीमेटली सर्कल बोलें इसे? so approximately circle. So the idea is कि हम जो अर्थ का सन के अराउंड ऑर्बिट को अप्रोक्सीमेट कर रहे होते हैं, सो वो हम अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर कहते हैं, लेकिन ये असल में सर्कुलर नहीं होता। सो अगेन इट्स अ जनरलाइजेशन दैट वी गो टूवर्ड्स बिकॉज वो आपको ये सर्कुलर ऑर्बिट में ला के फिर आपसे कैलकुलेशन करवानी है उसने उसने आपसे इस अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड निकलवानी है, अर्थ की टाइम ड्यूरेशंस निकालनी है, इस तरह की चीजें करवानी है। सो फॉर दैट we approximated to circular. The only thing that may be in your syllabus is not orbiting with a circular path is the comets, जो कि एक elliptical path में होते हैं। अच्छा, सन से लाइट को कितना टाइम लगता है अर्थ में आने में? So बिकॉज वो it's इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है। so it's basically 6 minutes and according to it's 6 minutes. So ये एक आइंस्टाइन की बड़ी फिट थॉट एक्सपेरिमेंट थी जिसमें आइंस्टाइन ने अपने आप से ये पूछा था कि अगर आज सन बंद हो जाए एंड सन सीजेस टू एग्जिस्ट तो अर्थ अपने ऑर्बिट को कितनी देर में छोड़ देगी, बिकॉज रिमेंबर द अर्थ इज इन द ऑर्बिट ऑफ द सन बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सन इटसेल्फ एंड द मास ऑफ द सन, बिकॉज 99% ऑफ द मास ऑफ द सोलर सिस्टम इज द सन इटसेल्फ. So the moment sun vanishes, so it's a thought experiment. Obviously, sun एकदम से vanish नहीं होगा. ये हम अगले chapter में जाके पढ़ेंगे कि sun को खत्म होने में भी मतलब अभी midway mark में है. It's going to take another 2 billion years before this 200 billion years before the sun finishes. But not only that, 2 billion years. But not only that, it's going to go through all of the stages. जिसमें एक stage red giant आएगा, जिसमें हम खत्म हो जाएंगे. So it's not going to be कि sun vanish होगा और हमारे साथ कुछ होगा. वो हम लाइफ साइकिल ऑफ स्टार में देख लेंगे। लेकिन अभी के लिए हम ये याद कर सकते हैं कि 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं अर्थ तक लाइट में आने में। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अब 8 मिनट 20 की बजाय वी कैन से दैट इट इज जस्ट 500 सेकंड्स, राइट? Yeah, approximately 500 seconds आप कह सकते हैं। परफेक्ट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन एंड दैट इज, अर्थ की हमने बात कर ली, थोड़ा ऑर्बिटल स्पीड के बारे में बता दें कि अर्थ ये जो रोटेट करती है। So orbital speed के अंदर there is this one formula that we need to know. आपने हमेशा याद रखना है कि the circumference of any orbit is basically 2 pi r. So आपकी अर्थ, और ये थोड़ा सा जरूरी है, so this has to be taken from center to center. So जो diameter है, that diameter is from the center of the sun to the center of the earth. So that is r. इसको हमने 2 pi r में मल्टीप्लाई किया तो we get the area. So that's why वो उसको सर्कुलर कह रहा था ऑर्बिट को। जी बिकॉज मैंने वही कहा था कि उसने आपसे बाद में एवरेज ऑर्बिटल स्पीड निकलवानी है। और ये याद रखिए कि यहाँ पे वो एवरेज का लफ्ज भी क्यों इस्तेमाल कर रहा है, बिकॉज वो जानता है कि क्योंकि ये पाथवे नहीं सर्कुलर है
तो कुछ टाइम ऐसे होते हैं कि जब अर्थ तेज मूव कर रही होती है और कुछ टाइम ऐसे होते हैं जब अर्थ स्लो मूव कर रही होती है। लेकिन हम जो है वो एक जेनेरिक वैल्यू की तरफ जाएंगे जो कि एक एवरेज वैल्यू है, which is the circumference of the earth that earth has to cover around the sun, and we divide it by the time taken, which is the 365 days. और ये कैलकुलेशन जब आप करते हैं तो इसमें you have to make sure that you convert, so आपने आंसर जो है मीटर्स पर सेकंड में देना है। तो सर ये आ जाके तो वही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम फॉर्मूला बन गया ना। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, ये तो बड़ा आसान है जी। ठीक है, ओके सर, अब आप सैटेलाइट्स के बारे में बता रहे थे। सो अब ये, सो इफ यू लुक एट बोथ ऑफ द सिलेबस, जो मून एज अ नेचुरल सैटेलाइट दैट इज अराउंड द सन, उसके ऑब्वियसली फेजेस होते हैं जो हमें नजर आते हैं, और उन फेजेस के नाम जो हैं स्पेसिफिकली वो आपके सिलेबस में हैं। सो फॉर एग्जांपल, it's easier to remember them as quarters, but if you want to go into a little bit of more detail, तो आप इनको इनके एक्चुअली यानी वेनिंग, वैक्सिंग और वो सारे के सारे नॉमेनक्लेचर के साथ याद करेंगे। I would suggest कि it's not a rocket science, it's not a very difficult thing to remember. अगर आप गौर से देखें तो मून हमें क्यों विजिबल है, ये मून हमें क्यों नजर आ रहा है? देखें, अगर आपके पास न्यू मून है ना, तो न्यू मून में हो क्या रहा है कि मून की सिर्फ जो ये वाली साइड है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका सन है, सो दीज आर ऑल ऑफ द सन रेज दैट आर कमिंग, सो ये वाली साइड तो आपकी इल्यूमिनेट हो गई, और जब ये इल्यूमिनेट हो गई तो यहां से सन की लाइट्स आई और यहां से वापस चली गई। अब द फेस दैट इज फेसिंग द अर्थ डज नॉट गेट टू सी द मून, बिकॉज वो बिल्कुल डार्क होता है। बिकॉज रिमेंबर, मून जो है वो एक 3D ऑब्जेक्ट है जिसमें एक ये साइड और एक ये साइड है। सो ये वाली साइड सन को फेस कर रही थी, सन की रेज आई वापस चली गई। जो दूसरी साइड थी विच वॉज फेसिंग द अर्थ, वो आपको डार्क नजर आई। तो इसलिए आपका जो न्यू मून होता है वो एक बिल्कुल ही डार्क चीज होती है, और पहली तारीख पे यू गेट दिस क्रेसेंट, एक बहुत पतली सी लकीर आपको नजर आती है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप फुल मून की बात करें तो फुल मून में क्या हुआ है? अब ये जो सनलाइट है ऑब्वियसली ये यहां पे फॉल कर रही है, और ये यहां से ये जो लाइट है, सो इट गेट्स हियर and it comes back, it reflects back to the earth. So now you can see the moon. So this is when you see the full moon, and that is halfway cycle. So you start with a dark moon, which is not visible. Halfway through the lunar cycle, you see the full moon, and then you come back to the dark moon. और उसके दरमियान में you have waxing, waning, इस तरह की phases, जिनको आपने जरूर याद करना है। सो आई वुड सजेस्ट, ये बहुत सी किताबों में भी गिवन है, यू कुड सिंपली गो मेक अ चार्ट ऑफ इट, एंड बाय मेकिंग चार्ट, और मजे की बात ये है कि यू डोंट इवन हैव टू थिंक अबाउट इट अ लॉट, रोज प्रैक्टिस कर लें बाहर जाके मून को देख के, तो आपको नाम याद होते जाएंगे कि क्या सीन है तो क्या नहीं है। सो that's what we need to know about the lunar cycle. Just to add one more thing कि you need to remember के मून हमारी जिंदगी में एक्चुअली बहुत ज्यादा रोल इसलिए भी प्ले करता है। एक तो इसलिए करता है कि चलो इट हैज गिवन अस द लूनर कैलेंडर, और इस्लामिक कैलेंडर लूनर कैलेंडर है, बट द अदर थिंग दैट इज हैपनिंग इज ऑब्वियसली दैट यू आल्सो हैव द टाइडल एनर्जी और द टाइड्स completely happening because of the moon. So whenever you have a high tide or a low tide, that's because of the positioning of the moon, and that, so there's a very interesting perspective. मैंने video देखी थी, I wasn't able to bring it to this class this weekend, but probably I'll try and share that link of that video also, where the moon is orbiting the earth, and with that it's carrying the water as tides, and those tides basically power all of the oceans, that mixes the water and powers the marine life. So that's pretty अच्छा much सर, it. यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को ये जरूर बताना चाहूंगा कि द फेजेस ऑफ द मून, दिस इज इन IGCSE सिलेबस,
बिल्कुल ओ लेवल सिलेबस में फेजेस ऑफ द मून के ऊपर बात नहीं करता, वो सिर्फ यही कहता है कि यू जस्ट हैव टू नो दैट द मून इज आवर नेचुरल सैटेलाइट, और वो एक महीने में तकरीबन एक महीने में अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर लेता है. मेरा मतलब what I would suggest is कि even अगर आप O levels में भी हो ना, once and for all, it's not very difficult to remember these names. Although ये आपको quiz नहीं करेगा, but the idea is as generally holistically knowledge आपने किस तरह से gather किया है, उसमें बेहतर है कि यार आप इनके नामों से इसको याद कर लो और एक महीने practice कर लो, सारी जिंदगी याद रहेंगे. But उसके साथ main चीज ये है कि you'll now be able to communicate. आप मून देख के डेट बता सकते हो लूनर की. So you don't have to use your Google to see कि मुहर्रम की क्या डेट है, तो रमजान की क्या डेट है, तो क्या चल रहा है, तो क्या नहीं चल रहा है, ईद कब आ रही है. So that's आप कह रहे हैं कि obviously हमें वो मौलाना साहब की स्पीच सुनने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हम खुद बता आप सकते खुद हैं. कफील हो जाएंगे, आप अपनी ईद खुद डिक्लेयर कर सकते हैं इस बार इसके बाद. ठीक है जी. So just to put the Earth into perspective, remember that Earth is a rocky planet, which is out of the 4 rocky planets present at a Goldilocks zone. So I always talk about this right now, and matlab ever increasing. You have more and more planets discovered near their stars in Goldilocks zone. However, we haven't been able to see whether there is intelligent life there or not. But for a planet to be in the Goldilocks zone enables it to have water. And when it has water, that kind of makes way for life, or is a very key step in the evolutionary process. So obviously, आपकी Earth थोड़ी सी sun के करीब हो जाए या थोड़ी सी sun से दूर हो जाए, so that's going to tip the balance of life on Earth, and maybe our life is not going to remain the same. जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर आप सारे के सारे उठ के मार्स पे चले जाएं, तो simply because G की वैल्यू मार्स पे डिफरेंट है, आपकी पूरे का पूरा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है ना वो चेंज होना शुरू हो जाएगा. या अगर आप बहुत देर स्पेस के अंदर किसी चीज पे ऑर्बिट कर रहे हैं, तो देयर हैव बीन स्टडीज बाय नासा कि आपका डीएनए चेंज हो जाता है. So it's a very interesting perspective to understand that what makes us is actually our home planet. Is actually the value of G, is actually how far we are from the sun, is actually all these little things which may be a very human-centric view, but that is who we are. So I think that's pretty much it that you need to know मतलब अगर about. लाइफ किसी और प्लैनेट पे इवॉल्व होती, so like you're saying कि अगर लाइफ किसी और प्लैनेट पे इवॉल्व होती, तो the way our body works और हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है वो टोटली डिफरेंट होता. Yeah, definitely. So that's the whole idea कि जब आप किसी से पूछते हैं ये सवाल कि जी एलियंस डिस्कवर हुए हैं या नहीं हुए, एलियंस तो हैं, लेकिन एलियन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके पास हैं. एलियन इंटेलिजेंट बीइंग्स आपको अभी तक नहीं मिले, या अगलों ने आपको मुंह नहीं लगाया. सो देयर आर अ लॉट ऑफ व्यूज. कुछ कहते हैं कि उन्होंने दूरबीन से देखा कि ये तो ह्यूमन बीइंग्स हैं और ये तो ये कर रहे हैं, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ये खुद ही थोड़ी देर में इधर उधर हो जाएंगे, तो इनसे कांटेक्ट करने की जरूरत क्या है. सो देयर आर अ लॉट ऑफ ड्रेक्स इक्वेशन है जो कि वर्कआउट करती है कि आपके पास इंटेलिजेंट लाइफ है या नहीं है. सो इट्स इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स टू लुक एट, बट यस, ये एक गिवन है that whether we as a future make a colony on moon, we make a colony on Mars, we are able to power jets and shift a certain amount of human beings into another planet, all of those steps are going to change who we are. And a lot of us belongs, or a lot of identity, or a lot of biology and a lot of physiology of us is basically rooted in us being on Earth. ठीक है जी. अब जरा सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत बता दें. ठीक है. So when you look at the solar system, obviously, so I think यहाँ पे ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि मैं I want to share with you, and that is the story. अगर आपने किसी ने स्टार ट्रेक देखी हुई है या स्टार वॉर्स देखी हुई है, तो स्टार ट्रेक के अंदर you have this character called Spock, who comes from the Vulcan island, Vulcan planet. And Vulcan planet is basically Vulcan planet की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. और वो स्टोरी ये है कि जिस वक्त न्यूटोनियन इक्वेशंस जो थी, याद रखें कि न्यूटोनियन इक्वेशंस जो हैं वो आज भी नासा में इस्तेमाल होती हैं फॉर लॉन्चिंग प्लैनेट्स.
for launching rockets into outer space, which means that हम कभी कभार जब ये बात करते हैं ना, and this is the genius of Newton also, for him not having any sort of equipment, for him not even having the means to see what is happening outside, he was able to work out these beautiful equations which are timeless and to this day are used by NASA to send spaceships and to send rockets and to send satellites. अच्छा, अब जब एक बड़ी इंटरेस्टिंग शिफ्ट आती है मॉडर्न फिजिक्स में, व्हेन वी से कि न्यूटोनियन जो आइडियाज थे दे बिकेम आउटडेटेड एंड आइंस्टाइन के आइडियाज, तो जनरल रिलेटिविटी एंड ये सारी की सारी बातें. सो आई वांट टू टच अ लिटिल बिट अपॉन दैट कि बेसिकली हुआ क्या था कि जिस वक्त आइंस्टाइन वाज लुकिंग एट ऑल ऑफ दीज इक्वेशंस, तो आइंस्टाइन से पहले हुआ क्या कि हमें नेपच्यून तक तो चीजें नजर आ गई. So we saw that Neptune exist करता है. अब हो ये रहा था कि नेपच्यून का जो ऑर्बिट था ना वो जरा एबनॉर्मली बिहेव कर रहा था. अब क्योंकि वो एबनॉर्मली बिहेव कर रहा था तो पीपल फोकस देयर टेलीस्कोप्स फॉर अनदर 10 एंड रिमेंबर कि प्लूटो का जो ऑर्बिट है वो बहुत बड़ा है. इट टेक्स around about 260 years for this orbit to complete, if I'm not I don't exactly know the number, but it's somewhere north of 200 plus years. हमारा orbit एक year का. So it took a lot of time for them to look at कि अच्छा ठीक है नेपच्यून कहाँ पे है, और नेपच्यून के साथ उनको नजर आया एक और प्लैनेट प्लूटो. तो समझ ये लगी कि जी जो नेपच्यून है, नेपच्यून का ऑर्बिट इस वजह से खराब हुआ है क्योंकि प्लूटो एग्जिस्ट करता है. अच्छा, वेरी गुड. एंड उसके बाद ना धूम मच गई, सबने कहा कि जी ये तो जबरदस्त बात होगी, वी डिस्कवर्ड अ न्यू प्लैनेट. अच्छा, अब इसकी दो एस्पेक्ट्स है. एक एस्पेक्ट ये है कि जैसे जैसे हमारी टेलीस्कोप्स बेहतर होती गई ना, हमें समझ ये लगी कि प्लूटो का साइज छोटा होता गया, छोटा होता गया, छोटा होता गया, यहाँ तक कि आज हमें ये पता है कि प्लूटो का जो साइज है ना वो हाफ द रशिया का साइज है. यानी रशिया एज अ कंट्री को हाफ कर दो तो वो प्लूटो का साइज है. ठीक है. सो एक तो ये चीज हुई कि वो चीज होना शुरू होगी. अच्छा, अब इशू ये था कि मरकरी हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑर्बिट. मरकरी एक रिसेशन के ऑर्बिट में जाता है. यू कैन रिसर्च मोर अबाउट इट. एंड दिस वाज दिस वन ऑर्बिट दैट न्यूटोनियन आइडियाज अबाउट स्पेस कुड नॉट आंसर. And this is where Einstein came in and he gave his entire idea of relativity. और एक्चुअली आइंस्टाइन से पहले आपकी पूरी की पूरी जो पॉप कल्चर है या पॉप साइंस है, दे सेड कि जिस तरह हमें नेपच्यून के सामने एक प्लूटो मिला है ना, उसी तरह मरकरी के सामने यहाँ पे एक और प्लैनेट होगा जिसका नाम है वल्कन. एंड यू स्टार्ट लुकिंग एट द कॉमिक रेफरेंसेस एंड यू विल फाइंड सो मेनी थिंग्स देयर where they're talking about Vulcan and they're finding Vulcan and they're like हमें वो सूरज इतना शाइन कर रहा है तो हमें इसको Vulcan नजर नहीं आ रहा, ये वो फलाना ढमकाना. एंड स्टार ट्रेक क्योंकि ये उस जमाने की है तो आप लिटरली देख सकते हैं कि यू हैव अ लॉट ऑफ लिटरेचर डेवलप्ड ऑन इट आल्सो. बहरहाल Einstein comes with his equations and we realize even though Newtonian equations were very nice, but they were not giving the actual picture. And so agar today we ask why do planets orbit the sun, the answer that we use is the Einstein's answer and not the Newtonian answer. But interestingly जो इस पे एक conclusion है वो ये है कि जो आइंस्टाइन का आइडिया था, that is true when you're looking at objects near a huge star. So Pluto, Neptune, जैसे जैसे आप किसी स्टार से दूर जाते जाएंगे, न्यूटोनियन आइडिया स्टार्ट मेकिंग मोर सेंस. जैसे जैसे आप ब्लैक होल्स और स्टार से करीब आते जाएंगे, आइंस्टाइन के आइडिया स्टार्ट मेकिंग सेंस. सो दैट्स बेसिकली द डिस्टिंक्शन. बड़े लोग ये कहते हैं वो अच्छा हमें आइंस्टाइन क्यों हमें न्यूटन क्यों पढ़ाया जा रहा है, आइंस्टाइन ने तो सारी बातें करती हैं. तो उसका जवाब ये है कि भाई he was a genius because he not only laid down the basis of physics mathematically, but he was able to give you the equations that you to this day use to power your spaceships into the orbit. अच्छा, अब हुआ क्या कि हमारा ये सोलर सिस्टम बना कैसे और इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है. So like all of the other stars in the universe,
आपके सोलर सिस्टम में क्या हुआ कि यू हैड अ लॉट ऑफ इंटरस्टेलर डस्ट, हाइड्रोजन एंड हीलियम कलेक्टेड। जिस तरह आपके कमरे में मट्टी नहीं होती लेकिन कहीं कुछ जगहों पे मट्टी ज्यादा होती है, उसी तरह यूनिवर्स में ना हाइड्रोजन, हीलियम और इंटरस्टेलर डस्ट फैली हुई है, लेकिन कुछ जगहों पे वो मट्टी ज्यादा हो जाती है, और वो मट्टी ओवर टाइम जो है ना वो क्लोज 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 आना शुरू हो जाती है। अच्छा, व्हेन इट्स कमिंग वेरी क्लोज वो हीट अप होना शुरू हो जाती है, और जब हीट अप होना शुरू हो जाती है तो दैट ट्रिगर्स द फ्यूजन रिएक्शन। अब हुआ क्या कि आपके पास जो सन के अंदर इंटरस्टेलर डस्ट थी, उसमें जो हैवियर एलिमेंट्स थे, उन्होंने आपके ये रॉकी प्लैनेट्स बना दिए, विच इज मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। और आपके पास जो हाइड्रोजन और हीलियम थी, विच वाज द लेस डेंस या लाइटर एलिमेंट्स, दे वेंट far off from the sun and formed your gas giants. So दो चीजें, गैस जाइंट्स को गैस जाइंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इतना लो है कि हाइड्रोजन, हीलियम और ये इस तरह की गैसेस जो है आपको फ्रोजन फॉर्म में नजर आती है। और ना सिर्फ वो आपको फ्रोजन फॉर्म में नजर आती है, बट these planets have very very low surface temperatures and life there does not exist. अच्छा, अब इनके दरमियान में क्या है, जुपिटर और मार्स अच्छा, के सरफेस दरमियान में आपका यहाँ पे मतलब उनकी आउटर बाउंड्री है ना, क्योंकि ऐसा सॉलिड सरफेस तो नहीं है ना वहाँ पे। बिल्कुल कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। सो यू हैव बेसिकली गैसेस दैट हैव बीन सॉलिडिफाइड, क्योंकि इनके सब जीरो टेम्परेचर चले जाते हैं -200 तक। अगर आप गौर से, आई कैन शेयर विद यू व्हाट आर द टेम्परेचर्स। सो इफ यू लुक एट द सरफेस टेम्परेचर ऑफ मार्स, तो ये -23 हो गया, और व्हेन यू गो टुवर्ड्स नेपच्यून तो ये -220 हो गया। अब आप खुद केमिस्ट्री देख सकते हैं कि -220 पे या -210 पे आपकी जितनी भी मोस्टली गैसेस होती हैं वो आपकी सॉलिडिफाई कर जाती हैं, और क्योंकि वो सॉलिडिफाई कर जाती हैं तो ये गैस जाइंट्स है। दूसरी बात, गैस जाइंट्स का साइज क्यों बड़ा था? वो इसलिए बड़ा था कि भाई आपके पास हाइड्रोजन और हीलियम जो है ना, दैट इज इन अबंडेंस, वो सबसे ज्यादा तादाद में है, और जो हैवियर एलिमेंट्स है जिन्होंने रॉकी प्लैनेट्स बनाए हैं वो कम तादाद में है। तो इसलिए आपके रॉकी प्लैनेट्स वर नॉट वेरी वेरी ह्यूज, बट योर गैस जाइंट्स वेंट टू अ ह्यूज साइज। इनके दरमियान में हमारे पास एस्ट्रॉइड बेल्ट आ गई। एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या थी? सिंपल रॉक्स थे, ठीक है। इनमें से कुछ रॉक्स के ऊपर बहुत ज्यादा मिनरल्स भी हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ स्टार्टअप कंपनीज इन सिलिकॉन वैलीज दैट वांट टू डू एस्ट्रॉइड माइनिंग, एंड दे फील कि अच्छा, अगर हमारे पास रिसोर्सेज अर्थ पे खत्म हो गए हैं तो हम एस्ट्रॉइड को पकड़ के उसको माइन करके वो रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसके बाद प्लूटो, क्योंकि साइज उसका छोटा होता गया, उसको हमने एक और कैटेगरी में डाल दिया और हमने कहा ये तो डॉर्फ प्लैनेट है। So dwarf planets बेसिकली क्या होते हैं? These are collection of ice and dust. That's pretty much it. और कुछ भी नहीं है इनमें। अब एस्ट्रॉइड्स हो गए, रॉकी प्लैनेट्स हो गए, गैस जाइंट्स हो गए, ड्वार्फ प्लैनेट्स हो गए। अब यानी कि हमारे अगर पास हम सोलर सिस्टम को मैप करें तो हमारे पास सेंटर में एक सन है, वो हमारा वो स्टार है, वो 99% मीडियम साइज उसका स्टार है, मास है। ठीक है। और लेकिन उसको वो मीडियम साइज स्टार कहते हैं, मतलब वो इतना कोई बड़ा स्टार नहीं है, राइट? ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्लैनेट्स में हम 8 बोलेंगे कि 9 बोलेंगे? 8, 9 तो planets होते हैं हमारे ड्वार्फ पास, प्लैनेट है। ठीक It's है। not और वो, classified अच्छा, as, हमारे पास सिर्फ प्लूटो डॉर्फ प्लैनेट है, कोई और नहीं है यहाँ पे? नहीं, आपके एस्ट्रॉइड बेल्ट में एक और सीरीज, एक और प्लैनेट है which is a dwarf planet, and you know with time आपको और भी dwarf planets डिस्कवर होते रहते हैं। So ठीक it's है। again for somebody who is an astronomy geek, there is so much information to look at कि आप, there is a never ending thing here. अच्छा सर, यहाँ पे सिलेबस में ना एक टर्म है जो मुझे बड़ा कंफ्यूज की थी जब मैंने पहली दफा देखा था। वो कहते हैं कि माइनर प्लैनेट्स, और उसमें उसने ड्वार्फ प्लैनेट को भी डाला हुआ है और बड़े एस्ट्रॉइड्स को भी डाला हुआ है, तो इस पे थोड़ा सा समझा दो। So basically आपके जो माइनर प्लैनेट्स हैं उसके अंदर एक सब कैटेगरी है ना, बिकॉज आपके एस्ट्रॉइड्स में मोस्टली रॉकी होते हैं, और आपकी जो प्लूटो वगैरह है वहां पे आपकी डस्ट और आइस होती है। सो इन्होंने बेसिकली उनको कपल किया एक कैटेगरी में, और वो कैटेगरी बिकॉज ऑफ द साइज कैटेगरी है, कि उन्होंने कहा है कि मतलब अगर हम प्लूटो को कह रहे हैं कि उसका साइज रशिया से हाफ है, लेकिन उसको हम एक डॉर्फ प्लैनेट कह रहे हैं, तो एक एस्ट्रॉइड जो कि अच्छा खासा बड़ा है
उसको हम क्यों नहीं इस कैटेगरी में डालते? तो उन्होंने बेसिकली उसको कपल किया है just to make it easy for us to categorize and remember these things. So that's pretty much it. उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे मून्स, और डिफरेंट प्लैनेट्स के डिफरेंट मून्स हैं। कोई बिल्कुल प्लैनेट है जिसका कोई मून नहीं है? बिल्कुल। सो अब अगर आप बहुत रैशनली सोचें तो मरकरी इतना सन के करीब है कि अगर किसी चीज ने घूमना ही है तो वो सन के इर्द गिर्द घूमेगी, वो मरकरी के इर्द गिर्द तो नहीं घूमेगी। So obviously when you're thinking about moons, remember आपके मून भी क्यों बना था कि there was an asteroid collision के अंदर उसने टिल्ट भी ले आया, और टिल्ट लाने के बाद वो मून लॉन्च हो गया, and it's still because of inertia moving. अब वो जो सारा का सारा मोशन है, remember the moon is in motion because the earth is attracting it. अब यही चीज अगर मरकरी के इर्द गिर्द हो तो obviously वो would rather prefer to go towards a larger gravitational field that is of the sun, which is the 99% of the total mass of the solar system, rather than moving around a small sa Mercury. ठीक है? So obviously Mercury does not have a moon. और जिस वक्त आप जाते जाते हैं into a larger planets, so we see obviously the number of moons increase, and that's pretty much it. ठीक है। और इसके अलावा कोई और बॉडीज जो सोलर सिस्टम में हैं, मतलब सूरज हो गया, द प्लैनेट्स दैट वी हैव, द माइनर प्लैनेट्स एंड द मून्स, उसके अलावा कुछ है हमारे सोलर सिस्टम? आई थिंक सबसे ज्यादा हमने एज अ ह्यूमन बीइंग या एज सब कॉन्टिनेंट के लोग जिस चीज को रोमांटिसाइज किया है वो टूटा सितारा है। हमने कहा है कि जी टूटा सितारा देखे तो आप दुआ मांग लें, आप ये कर लें, वो कर लें। सो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ बॉलीवुड रेफरेंसेस दैट वी हैव ग्रोन अप विद। अब वो टूटे सितारे की एक्चुअल असलियत क्या है? इट्स बेसिकली अ कॉमेट, एंड कॉमेट्स बेसिकली हैव एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। सो और इलिप्टिकल ऑर्बिट भी क्या है कि जब एक कॉमेट इज अप्रोचिंग द सन तो वो स्पीड अप हो जाता है, एंड व्हेन इट इज गोइंग अवे इट स्लोज डाउन। अब जब एक कॉमेट सन को अप्रोच कर रहा होता है तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। अब कॉमेट है क्या? कॉमेट बेसिकली जो है ना, डर्टी स्नोबॉल है। इट इज डस्ट एंड स्नो। अब वो हुआ क्या कि जब वो अर्थ के करीब, जब वो सन के करीब आ रहा है तो वो जो उसकी आइस है वो इवेपोरेट करना शुरू हो गई, और वो जब इवेपोरेट करना शुरू होगी तो ये आपको एक सफेद सी जो उसकी टेल नजर आती है ना, दिस इज बेसिकली द आइस इवेपोरेटिंग एंड जनरेटिंग दिस टेल। सो जब भी आपको कोई चीज नजर आए जिसकी आपको अच्छी खासी टेल नजर आ रही है, तो दैट्स बेसिकली अ कॉमेट एंड इट्स गोइंग टुवर्ड्स द सन, बिकॉज़ सर इसका ये मुझे एक टेम्परेचर बात इंक्रीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, मतलब यहाँ से अगर मैं थर्मल फिजिक्स को रिलेट करने की कोशिश करूं कि वहां पे कोई एटमॉस्फेयर तो है नहीं, तो इसको कोई फ्रिक्शन नहीं है इसके पास, तो ये जब मूव करता है तो वो सडनली उसके पास काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आती है कि वो इवेपोरेट कर जाती है? इसकी क्या रीजन है? ओके, सो द आइडिया इज कि जब भी आपके पास कोई भी चीज ऑर्बिट में होती है तो देयर इज दिस थिंग व्हिच इज ऑलरेडी इन मोशन ऑलरेडी हैज अ किनेटिक एनर्जी। अब वो किनेटिक एनर्जी कहां से आ रही है कि जब ये यहां पे आता है ना तो बेसिकली सन इसे स्लिंग शॉट करता है। So the moment it comes close to the sun, the pull is so much, यानी कि आपका भाई आपके सामने से गुजर के जा रहा है और आपने क्या किया, आपने उसका हाथ पकड़ा अपनी तरफ, लेकिन आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई परपेंडिकुलरी। तो जब आपने उस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाई और वो आपके सामने से जा रहा है तो दो चीजें होंगी, एक तो वो सर्कुलर पाथ में जाएगा, स्लिंग शॉट करेगा, और दूसरा जितनी ज्यादा आप फोर्स लगाएंगे उतना तेजी से जाएगा। So the moment the comet comes close to the sun, the gravitational attraction of the sun is more. So you have a larger force here as compared to, let's suppose, a force here, जो कि यहाँ पे लग रही है. And because you have a larger force, it basically slingshots the comet into the space. किसी ने मेरे ख्याल से पूछा है हॉकिंग रेडिएशन के बारे में, so I can very quickly answer that. I think we're done with the time also. So we can leave the universe and the stars for the next session. But I would like you to still answer some past paper questions अगर आपके पास। Sure. I can do that. Actually, I was hoping कि if क्योंकि इसके there are some past papers that the Cambridge has issued, and I was hoping that once we're done with it, once we're done with the second chapter also, because वो उन्होंने compilation दी है पूरी space physics की,
So we can maybe once we're done with the space physics, we can very quickly go over that. But obviously, if there are some questions that the audience has, I would love to answer that question. Hawking radiation वाला मैं जल्दी से बता देता हूँ कि एक इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स था जो कि हमें फेस किया, और वो ये हुआ कि हमने देखा कि ब्लैक होल जो है वो सारे के सारे मैटर को खा जाता है. अगर वो सारे के सारे मैटर को खा जाता है तो फिर हमारा सवाल ये था कि वो मैटर जाता कहाँ है, और उसका जवाब हमें ये पता लगा कि वो मैटर एनर्जी की फॉर्म में रेडिएट होता है. और वो एंड दैट वाज अ डिस्कवरी दैट हॉकिंग मेड, और उसका नाम हमने फिर हॉकिंग रेडिएशन रखा. और वही हॉकिंग रेडिएशन हमारे तक आती है जिसके सिग्नेचर से हमें ये रियलाइज होता है कि ये ब्लैक होल है या नहीं है. अच्छा, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई नीड टू कनेक्ट माय चार्जर. श्योर सर. हादी, आपको आंसर मिल गया आपने हॉकिंग रेडिएशन का? All right, so until sir comes back, there are some past paper questions that I had, and I thought कि वो मैं आप लोगों के साथ share कर देता हूँ. So this is a worksheet that I found online, and this is Save My Exams. It's a decent website. उन्होंने थोड़ा सा update किया है इसको, so that's a good thing. So for example, accretion disk एक तो ये चीज है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे अभी, और फिर ये कि प्लैनेट्स बनते कैसे हैं, ये सारा कुछ है. I think we should talk about how Earth is. For example, ये जो क्वेश्चन है, the orbit of Venus around the sun is treated as a circular path. तो उसने आपको बता दिया कि ये सर्कल है, तो आपके ज़हन में फौरन आना चाहिए कि 2πr उसका डिस्टेंस होगा with an average radius of this. तो आपको उसने ही बता दिया. Now the important thing is कि 108.2 मिलियन को आप 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड ऑर्बिटल स्पीड पीरियड का मतलब है कि उसका साल कितनी देर का है. सो आवर ईयर इज, वी जस्ट कॉल इट अ ईयर एंड दैट इज 365 डेज, बट बाकियों के लिए वी यूज द आइडिया ऑफ ऑर्बिटल पीरियड व्हिच इज अगेन देयर ईयर, और उसको उसने 225 डेज या 5400 आवर्स बता दिया. अब हमने इसकी ऑर्बिटल स्पीड निकालनी है. अगेन ऑर्बिटल स्पीड का मतलब क्या होगा कि वो सन के गिर्द डिस्टेंस उसने ट्रैवल करना है 108 मिलियन किलोमीटर. रेडियस को यूज करके we will figure out the distance 2πr, and then we will divide it by the time that we have, जो कि hours में उसने हमें दिया हुआ है, and then we'll simply figure out the question. So these are some past paper questions, थोड़े से हैं, तो I was thinking कि आप इनको थोड़ा सा देख लें. So for example, this question on the phases of moon जिनकी अभी आप बात कर रहे थे. जी, so for example, it says which of the four options shows the moon after 7 days. So अगर आपके पास 28 days का पूरा साइकिल है, तो after 7 more days क्या होगा? So you will basically going to have, I guess, the waning crescent. So I think इसका B आंसर है. Can you check that? मुझे लगता है इसका B आंसर. I can check it here. Yeah. So the idea is कि यहाँ पे नहीं, इसका सी या बी आंसर है, या इसका 7 days के बाद ये कहाँ पे जाएगा? सो इफ इट्स हाफ के बाद, आई थिंक ये पूरा ब्लैक हो जाएगा. इट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट क्वार्टर. सी आंसर है. या सो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे कि इफ यू लुक एट द मून, एक्चुअली द रीजन व्हाई आई डिड नॉट वांट टू टच अपॉन दिस is there is a very interesting simulation that I have, but I wasn't able to play that. So उसके साथ मैंने इसकी नेमिंग करवानी है. So जैसे मिसाल के तौर पे आप राइट नाउ अगर आप IGCSE या O लेवल के स्टूडेंट हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कौन सी स्टेज है. जो मैं कह रहा था ना कि नाम आपने याद करने हैं, क्योंकि नामों से आपकी आइडेंटिफिकेशन होना शुरू हो जाएगी. सो यहाँ पे हो क्या रहा है कि C is the full moon. So it's basically when you're at the 14-day mark. This is the 7-day mark. So 7 days से 14. अगर इसमें 7 और days ऐड कर दें तो फिर you get A, और इसमें another 7 और days ऐड कर दें तो you get D. और इसमें बेसिकली अगर उसने हमें बोला होता कि you're starting with the fresh moon, तो फिर A होता हमारा आंसर. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और अगर उसने हमें जो ऊपर वाली डायग्राम दी हुई है हम वहां से स्टार्ट करें तो फिर हम C पे जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और अगर 7 की जगह उसने 3.5 डे दे दिया होता, यानी तो फिर we would have gone for B. तो सर कभी D हो सकता है?
D नहीं, 7 days वो आपको हाफ मून देगा तो D पे आएगा, because D is again D and C are basically the 0 and 14 mark. तो वो 7 day के डिफरेंस पे, तो unless आप वो दरमियान वाला शो कर रहे हो, so जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में C आया था क्योंकि 7 days later you will have the full. उसके बाद आई थिंक अगर इसको फ्लिप कर दें तो फिर D आ सकता है. So if you flip the या मैं colors, किसी तो क्लिप्स फिर की you बात will, कर रहा हूँ. yeah. If you flip the colors, तो फिर you have D, sorry. अच्छा सर, ये क्वेश्चन है अच्छा हाँ, ऑर्बिटल ये स्पीड कैसे I कैलकुलेट wanted to actually talk a little bit more in detail. ये मैंने यहाँ पे भी निकाला हुआ था. If you could allow me to screen share, क्योंकि ऑफ कोर्स सर. ये जो है ना, इसमें ये तो एक part of the चीज है. There are a lot of other things जो कि वो आपसे ट्रेंड्स पूछता है. ठीक है. सो मिसाल के तौर पे कुछ जो ट्रेंड्स हैं, तो सबसे पहला वो ट्रेंड आपसे ये पूछता है कि जिस वक्त आप when you start moving away from the sun, so what is the trend on the surface temperature? So you will see that there is a consistent decline in the surface temperature. एक चीज आपको ये नजर आती है. When you look at the density of the planets, there is again a consistent decline except for Uranus and Neptune. So Saturn, थोड़ा सा, Saturn is the lightest because it is all gas, probably, and Uranus and Neptune are again a little bit of more, and that again has to do with the makeup of the elements within the planet. अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप ये देखें तो they have not given you the orbital speed here. अच्छा, अब orbit average distance from the sun आपका जब increase कर रहा है as you go down, so you see that the time of the orbit is also increasing. And what they can a lot of times ask you is they will give you a random different distance and they will give you a random orbital time. और वो आपको कहेंगे जी एवरेज स्पीड निकाल दें इसकी. और दूसरी चीज अगर आप यहाँ पे भी देखें, अभी हमने जैसे अहमद ने बात की थी कि कौन से प्लैनेट्स है जिनके कोई मून्स नहीं है, तो जितना कोई प्लैनेट सन के करीब है तो इट विल obviously not have moons because the sun is the major force there जो कि वहां पे उसको अट्रैक्ट कर रही है. दूसरी चीज जो है वो ये है, as you move away तो आपके मून्स जो हैं पहले बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं और फिर वो डिक्रीज कर जाते हैं. So again there is no consistent trend. And ये जो चीजें हैं ना, so when I say the reason why there are certain answers that you give and certain answers that you leave the learner to think about is these are the questions that you need to think about. कि अच्छा भाई ये मून दरमियान में क्यों चेंज हो रहा है, या ये डेंसिटी दरमियान में क्यों डिप हो रही है. अगर आप ये अनॉमलीज देख लें तो ये अनॉमलीज आपको ऑब्वियसली विल गिव यू a little bit of more perspective on things. इसके बाद सरफेस ग्रेविटी अगर आप नोटिस करें तो सरफेस ग्रेविटी में भी क्या है कि सबसे ज्यादा सरफेस ग्रेविटी जुपिटर की है, और फिर जुपिटर से आगे आप जाते हैं तो सरफेस ग्रेविटी 9 है, 8.7 और 11 है, which means that there is no consistent trend in these things, but except for the fact कि अगर आप रॉकी प्लैनेट्स में देखें तो रॉकी प्लैनेट्स में मरकरी टू अर्थ इंक्रीज करता है, फिर मार्स डिक्रीज कर जाता है, फिर जुपिटर में बहुत हाई होता है. सो अगेन ये आपको एक सवाल आ सकता है कि आप इस ट्रेंड के ऊपर कमेंट करें. फिर जो एक और चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था यहाँ पे, जो कि एक सैंपल क्वेश्चन भी है. सो इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन अगेन, क्योंकि कैम्ब्रिज एंडोर्स्ड बुक है और ये क्वेश्चंस आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन एक्सपेक्ट टू बी हैविंग इन योर एग्जाम आल्सो. अब मिसाल के तौर पे ऑर्बिटल स्पीड का एक जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का हो सकता है. उनैस राना पूछ रहा है, आर द मून्स ऑफ अदर प्लैनेट्स सिमिलर टू आवर्स? So the idea is कि when you say are the moons similar, the moon visibly looks to us the way that it looks because of its proximity to the sun and the amount of light it's getting, and then it's the exposure that we're getting. So अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप मार्स पे हैं और आप मार्स पे सनसेट देख रहे हैं तो वो सनसेट ही बहुत डिफरेंट होगा. सो मिसाल आई कैन शो यू दैट कि if you look at the sunset on the Mars, so it's completely different.
Yep. This is the sunset on the Mars. और आप इसको कंपेयर कर सकते हैं अपनी अर्थ से कि इसका साइज ही डिफरेंट है. And I it's was good. actually blown away when I first saw this picture. Na, I think I was really young back then. Or Yeah. I was actually like, इस picture को अगर आप देखो, you realize कि this is a completely different planet जिसपे शायद हमारी जिंदगी में तो कभी कोई इंसान ना जा पाए. And yet we are able to get data from there, and we are able to control Voyager it की from it. images देखें अगर आप, हाँ. और जो उनकी images देखें, they give you such a interesting rendition of what is happening in Mars के आप दंग रह जाते हैं. But yeah, so the answer to your question is the appearance of the moon depends upon depend upon how it interacts or comes into the trajectory of the sun, and that gives it its color and the texture and all those things. But generally, moons hote yahi hai ki these are asteroids which hit the planet or which kind of got trapped into an orbit and hence are moving. So it could be a rocky thing also, or it could be a thing that looks like our moon. But there is no hard and fast rule कि moon का texture क्या होता है क्या नहीं होता. अच्छा जी. So if you look at it, so again this is a very interesting question that gives you an idea कि वो eventually आपसे orbital speed और ये equation और इस तरह की बातें ही कर रहा है. So एक तो ये expect करें कि इस तरह का सवाल आपको आ सकता है जहाँ पे कैलकुलेशन हैवी सवाल है जिसमें वो ऑर्बिटल स्पीड निकालेगा. आपको ये पता होना चाहिए मिलियन में कितने जीरोस है. अगर एग्जाम में यही सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि उसने क्या बोलते हैं 400 मिलियन किलोमीटर कह दिया है, तो आपको अगर ये नहीं पता कि उसमें 10⁻⁶ होता है, so that's going to be problematic for you. So एक तो ये चीज है जो कि आपको देखनी चाहिए. अब for example वो कहते हैं Jupiter is further away from the sun than is the Earth. Compare the surface temperature of Jupiter with that of Earth. Explain your answer. So obviously the surface temperature of the Jupiter will be less than as compared to the temperature of the Earth, and that's basically because it's located somewhere where you have minus the temperatures because it's very far away from the sun. फिर वो कहते हैं compare the mass of the Jupiter with that of the Earth. So the mass of the Jupiter is obviously way more because the contents that build up the Jupiter are way more in the solar system as compared to what makes up the Earth. Then it says compare the orbital speed of Jupiter with that of the Earth. Now, in order to do that, either they're going to give you some sort of information where you can do that. So यहाँ पे इस सवाल के अंदर they're going to provide you with some sort of information. Okay, what is the orbital speed? What is the orbital distance? So what is the average distance and what is the duration? And then you can calculate and do these comparison. So together, the orbital time of Mars around the sun is 1.9 Earth years. An orbital path is 1.5 times longer than that of the Earth. So calculate the ratio of the orbital speed. So again, अगर आप इसी चीज को बड़ी जल्दी से देख लें, तो उसने आपसे रेशो की बात की है. सो अगर आपने कभी भी रेशो का सवाल आता है तो आपने हमेशा याद रखना है 2 पाई r ऑफ ऑर्बिटल स्पीड ऑफ मार्स है ना, तो इसको मार्स लिख लें डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ मार्स डिवाइडेड बाय 2 पाई ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय टाइम ऑन अर्थ. तो 2 पाई तो वैसे ही कैंसिल हो गया. एंड नाउ because you are given, so orbital time of the Mars around the sun is 1.9 Earth years, and the orbital path is 1.5 times longer than the Earth. So you do have the values of, so Rm is basically, so यहाँ पे अच्छा आप 2 पाई भी कैंसिल नहीं करोगे, उसने आपको पूरी की पूरी ये वैल्यू दी हुई है. ये पूरी की पूरी वैल्यू अगर इस पूरी की पूरी वैल्यू से कंपेयर करें तो ये 1.9 है. सो यू कैन से कि मार्स इज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ. सो इसको डिस्टेंस ऑफ, या इसको ऑर्बिटल डिस्टेंस लिख देते हैं, डिस्टेंस ऑफ द अर्थ, और डिवाइडेड बाय टाइम क्या है 1.9 अर्थ ईयर्स. सो ये 1.9 टाइम ऑफ द अर्थ हो गया. और नीचे आपके पास डिस्टेंस ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ द अर्थ है. सो अगेन आपका डी कैंसिल हो गया, 1.9 डिवाइडेड बाय 1.5, and that will give you the ratio that you need to calculate. So again, this is a higher level question that you can get,
where you need to manipulate. अगर ये नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप क्या बोलते हैं, वो आपको rather than के ऑर्बिटल डिस्टेंस दे, वो आपको रेडियस की रेशियोज भी दे सकता है, जहां पे फिर आप 2 पाई कैंसिल करके रेडियस जो है वो दूसरे की फॉर्म में इनपुट कर सकते हैं. सो ये दोनों रेशियो सवाल आ सकते हैं which you can get. उसके अलावा आई थिंक इस वाले पोर्शन में ज्यादातर मेनली आपने चीजें याद रखनी है. सो इफ यू लुक एट योर सिलेबस में हमेशा कमांड वर्ड्स होती हैं. कहीं पे वो आपको कहेगा अंडरस्टैंड, कहीं पे वो आपको कहेगा रिमेंबर, कहीं पे आपको कहेगा स्टेट. So with all of these command words, that basically is an inkling towards the kind of questions that you get. So if you keep that in mind, obviously that's going to help you in preparing for the kind of questions that you might have. और कोई अहमद questions करने हैं? Do you think MCQs और I think let's keep another session next week, क्योंकि इसका भी section 2 रहता है और AS के भी कुछ बच्चे interested थे. If you have time, sure. We can announce that and we can have a session for that. Thank you so much for coming. And I loved it. I don't know about you. I loved it. It was obviously fun. It's always fun. Chalo. So inshallah, see you next week. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz, everybody. Bye.